वंस आई हैड अ ट्रांजिट थ्रू कोलंबो और टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोलंबो में रहते हुए एयरपोर्ट पे किसी को भी कहीं ना जाने की खुशी है ना कहीं से आने की खुशी है. It was weird. Not that anything specific happened, but it was just weird in general. Even though the stay was like very long, very short, it was barely like 2-3 hours. But even then, even जो बोर्डिंग वाला रूम होता है जहाँ पे यू हैव टू वेट एंड वेट टू बोर्ड इन योर प्लेन, वो भी इतना वियर्ड सा था, सैड सा और अजीब सी वाइब थी वहाँ की. बट आई स्टिल हैड टू गो. सो हियर वी आर इन कोलम्बो अगेन. And to my surprise, they were so sweet. Our tour guide had, like all these flowers in their hands, the garlands, and they were so beautiful and so different from the garlands that we are used to of. And by the way, फिर I stepped out of the airport. अभी भी हम airport की vicinity में ही हैं. And my opinion was changed instantly. It was beautiful. It was also very hot. Let's just say it was, I think, 35 degrees over there and very humid for somebody who is very tired and who has had a very bad meal in the plane. Something like I don't know, paneer kebab and a black cup of tea. So मेरे लिए तो खैर that food did not make any sense. This is our tour guide who had the mission to show us around Colombo in one day and show us the maximum places that he can in a very short time. And I know it's challenging, but I guess for someone as awesome as he was at his job, I think it was a piece of cake. He was very patient. He told us everything, answered all the silly questions, made sure that agar, like there is more people who wanted to stay at some place for a couple of minutes for pictures and stuff. So he let them do that. And right now we are crossing a very popular stadium. If I remember the name, I'll put it down here. And this is more or less how we saw all of the places, most of the places at least. But I was like, the city was so welcoming. मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी नई जगह पे आई हूँ. There were like old houses and then there was a mix of big buildings. It was like modern construction थी, पुराने घर थे, green belts बहुत ज़्यादा थी. मतलब it was overall very beautiful. Even the sky was like so pretty कि I was like यार मैं तो सोच रही थी श्रीलंका पता नहीं कैसा होगा. बाय द वे दिस इज़ लोटस टावर और अगर आप इसको प्लेन से देखें या ऊपर से देखें ड्रोन के थ्रू तो वो लोटस की शेप का आपको नज़र आता है ऊपर से. रिक्शाज वर सो क्लीन एंड सो क्यूट. ऐसा लग रहा था अभी पैकेट से बाहर निकले. एंड आई डोंट हैव एनी बेटर वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ क्यूट दे वर. खैर इस वक्त तक मुझे टिक्का के भूख लगी हुई थी एंड आई कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर टू फाइनली गो टू आवर होटल. वी स्टेड एट होटल मिराज and the hospitality of this place was amazing. The food was amazing. The moment I entered this area, it smelled like curry patta and I knew instantly these people know how to make food, how to make good food, and I am not joking. Also, I've been so lucky when it comes to having the room with the view, because look at the view from this room and it was on the 8th floor. और द व्यू वॉज लाइक कि मैं तो शायद अपना बाकी का ट्रिप भी, बाकी का टूर भी रहने देती, कोई रेस्ट नहीं करती और मैं बस यहाँ पे जाके काउच पे बैठ जाती. लेकिन आई हैड अदर प्लान्स ऑफ कोर्स. आई हैड टू गेट आउट. सो आई गॉट रेडी अगेन, फ्रेश अप हुई थोड़ी सी, फ़ोन शोन चार्ज किया और देन वी हैड टू हेड आउट. But dude, I missed this room all day, all the time that I was outdoor. I could not wait to come back here and just rest and maybe, get a cup of tea, sit by the window and enjoy the view. है यहाँ पे आके हमारे टूर गाइड थोड़ा सा थक गए थे और उन्होंने बस में ऊंचे ऊंचे गाने लगा दिए थे और
they were like let them enjoy on their own. इस पॉइंट पे काफ़ी सारे लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि वो थोड़ा सा इस टूर से स्प्लिट कर जाएंगे और वो अपनी शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। सो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वील स्टिक अराउंड, और हमने रास्ते में ये म्यूज़ियम देखा। काफ़ी सारी पॉपुलर बिल्डिंग्स भी देखी थी। आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स एनी मोर, बट मैंने एक रिक्वेस्ट की थी हमारे टूर गाइड से कि लाइक एटलीस्ट टेक And अस टू वन you all प्लेस might वेयर know वी in कैन एक्चुअली फील द 2019 there व्यू, was a एंड नंबर flight टू bombast which was किसी ऐसी जगह पे certificate day जाना है happened जहाँ in से Sri मैं सो Lanka, वगैरह वगैरह और right? टिप्स ले सकूँ So फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। it was Cinnamon And Great, he did Shangri-La that. Hotel, and Kingsbury Unfortunately, I don't Hotel, have the all details suicide of those bombers by places IS because I organization. was so busy in shopping कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पे कुछ So और right वीडियो now बना we are रही थी। entering to one of the Dutch forts. Coming in, you will be able to see one of the oldest clock towers in Colombo, This is one which of the is built oldest in clock 1700s towers by in British. Colombo, and this is one of the buildings that was built back in the British times, before the British monarchy ended. And this is also a cute tea place where our tour guide took us, and he wanted us to have a cup of tea on him. Um, this is a very cute place, by the way, and I got myself a tin can of tea bags too. I have not yet tried them. They are iced tea. I should actually, because काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है. There were different teas of different power. They were brewing tea in front of you if you wanted to try something. There was like a whole menu of tea, and I got some gifts from here as well because Sri Lanka is known for its tea. So I had to pick up some tea from here for giving away. But this is the place that I enjoyed the most. This is a temple and a museum, and it's actually a lot of places in one. So it's like a whole institution. It's an active temple. यहाँ पे worships होती हैं, सब कुछ होता है. But the museum part of this temple was amazing. I think the entry fee is 500 rupees. 500 Pakistani rupees तो नहीं. I think ticket says 500 Sri Lankan rupees. So that's like almost equal to Pakistani rupees as well. श्रीलंका मुझे एटलीस्ट कोलंबो बहुत सस्ता लगा है इन टर्म्स ऑफ फूड वगैरह भी, और रेट भी बहुत अच्छा करेंसी का मिल जाता है। आप कहीं से भी एक्सचेंज कराएं, एयरपोर्ट से बस ना करवाइएगा। These statues were so big. मैं बिल्कुल नीचे खड़ी होके मैंने इसीलिए वीडियो नीचे से ऐसे करके ऊपर बनाई है, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि लाइक ये कितने बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं कि मतलब ओ एंड राइट नाउ बाय द वे वी आर अराउंड द एरिया वेयर अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स लिव। एक तो मुझे फॉर अ फैक्ट पता है कि हम जयसूर्या के घर के पास से भी गुजरे थे, उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे नाम लिए थे, मुझे याद नहीं था। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही पाकिस्तानी हरकत की थी। आई वॉज कंपेयरिंग दिस street with Mall Road, because I love that road and I love how like the trees they make an arch to like provide shadows, or it just looks very pretty. What really stuck with me was this temple and the statues and the museum that they have. Some of the statues were so small कि आपको उसके लिए magnifier use करना पड़ता है. There was Dutch currency over there. There was like jewelry, watches, crockery, furniture donated by royal families. It was just amazing. I was able to shop a little, get a couple of tea bags, boxes, and this is a picture of my garland. And then we also visited a mosque that's like apparently a very popular mosque over there. And then it was time for me to relax and unwind and get ready for traveling back to Pakistan. Sri Lanka has not disappointed me at all. In fact, if I can go back to Sri Lanka, I would really like to spend some more time in Colombo and visit a lot of other places. I have nothing but good words for Colombo, and if I ever go back to Sri Lanka, I would definitely go to Kandy and just like circle back to Colombo, because the beaches over here are lovely. But as much as I was enjoying the view, it was time for us to go back. Hello from a really tired human. Listen, मैं इधर इतना थक गई थी
कि हमारे प्लेन में अनाउंस हुआ कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ नहीं कर रहा है बिकॉज प्लेन के अंदर कोई फ़नी ख़राबी हो गई है। एंड देयर वर पीपल पैनिकिंग कि हमें प्लेन से उतरना है, हमने कहीं नहीं जाना, हमें दूसरे प्लेन में शिफ्ट करें, यू नो लाइक इट्स दैट ईजी। बट मैंने ब्लैंकेट ऊपर लिया एंड आई स्लेप्ट। थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली और मैंने समीन से बोला कि क्या सीन है। शी वाज लाइक किस चीज़ का क्या सीन है? एंड आई वाज लाइक टेक ऑफ का। शी इज़ लाइक हम पिछले 2 घंटे से हवा में हैं। एंड आई वाज लाइक ओके। उसकी थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस ने मेरे ऊपर एप्पल जूस गिरा दिया। वो समीन को दे दी थी, हु वाज ऑन द विंडो साइड। एंड शी स्पिल्ड द जूस ऑन मी। मैंने खामोशी से उससे ब्लैंकेट फोल्ड करके दिया है, उससे दूसरा ब्लैंकेट लिया है, मैंने फिर दोबारा ब्लैंकेट ऊपर लिया है और मैं सो गई थी। एंड दिस इज़ हाउ स्लीपी एंड टायर्ड आई वॉज। सो दिस वॉज माई ट्रिप टू कोलम्बो। आई होप यू एन्जॉयड इट। इफ़ यू डिड, लीव अ कॉमेंट एंड लाइक दिस वीडियो।